Hi everyone, and welcome back to official channel of LegalEdge. Now, before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. चलो. So let's start with our session. Now, लीगल रीजनिंग के पेपर की अगर हम बात करें तो पिछले 2 साल के पेपर्स को देखने के बाद वन थिंग विच टर्न्स आउट टू बी वेरी क्लियर इज दैट recent judgments of the Supreme Court are very important topics. Okay, you can expect a passage out of the recent judgments which were given by the Supreme Court of India in that year of your examinations are relevant for the purposes of your paper. And therefore, in this judgment or in this session, we are going to cover the recent landmark judgments of the Supreme Court of India from the year 2026. ठीक है ना. आज के सेशन की अगर हम बात करें तो we'll be having a discussion about 5 or 6 judgments which are given by the Supreme Court. One was related to right to die with dignity. The other one was related to right of adoptive mothers. The third one was related to gender equality in armed forces. The fourth was related to electoral integrity. The fifth one was related to menstrual hygiene or menstrual health. And the sixth one was related to the definition of OBC creamy layer. ठीक है. अब रेलेवेंस की अगर हम बात करें या कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन की अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू दीज जजमेंट्स तो कुछ चीजें यहां पर क्लियर है. जैसे वन ऑफ द जजमेंट वाज रिलेटेड टू आर्टिकल 21 which was right to life and personal liberty. Harish Rana का ये केस था which was related to the concept of passive euthanasia. Then gender equality under article 14, 15, 16. Armed forces वाला judgment या adoptive mothers वाला judgment. Both the judgments are related to this topic only, as well as the topic or the judgment related to OBC creamy layer. Then strengthening the electoral democracy, which was primarily the judgment in the light of SIR exercise, that is the special intensive revision which was recently conducted by the Election Commission of India. ठीक है, तो वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से रिलेटेड था. ह्यूमन डिग्निटी अगेन आर्टिकल 21. सोशल जस्टिस आपका वो जो व्हाट शुड आई से इक्वालिटी वाला जजमेंट था, ओबीसी क्रीमी लेयर वाला जजमेंट था. That was related to the concept of social justice and equality in reservation policies. So these are the major constitutional themes related to our judgment which we are going to discuss today. ठीक है, तो चलिए without wasting our time let's start our discussion. And the first judgment which we have is the case of Harish Rana versus Union of India of the year 2026, which was related to right to die with dignity. Now, when we look at Constitution of India, Article 21 of the Constitution, Article 21 of the Constitution gives every person right to life and personal liberty. Right to life and personal liberty, that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedures established by law. But क्या इसके अंदर right to die भी होगा? तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स में क्लियर करी पहले, लाइक द जजमेंट्स ऑफ ज्ञान कौर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज क्लियर करी कि भाई राइट टू लाइफ तो है बट राइट टू डाई नहीं है आपके पास. बट देन कम्स द सिचुएशन ऑफ अरुणा शॉनबाग. इस केस के बारे में आप सबने मेरे ख्याल से सुना होगा, राइट? अरुणा शॉनबाग का केस जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज क्लियर करी, दैट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स राइट टू डाई विथ dignity as well. In order to accord right to die with dignity to an individual, the Supreme Court eventually accepted the concept of passive euthanasia. Euthanasia basically refers to killing somebody through some kind of a medical intervention. Passive euthanasia वहां पर allow किया, that is removal of the life support systems. ठीक है, removal of life support system. And फिर subsequently common cause के judgment में in the year 2023 Supreme Court came up with the concept of living will. ठीक है, in 2003 in the common cause judgment Supreme Court came up with the living will as well, which is a kind of a document wherein a person clearly mentions the steps or the procedure which is to be followed or the decision which is to be taken when he is not in a position to take his own medical decisions. जब एक person अपने medical decisions को लेने की हालत में नहीं है, मतलब वो अगर एक परमानेंट या परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में जा चुका है, देन द पर्सन विल बी गिवन यूथनेशिया. इस तरीके के लिविंग विल के कॉन्सेप्ट को
उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया इसी लिविंग विल को हम एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव कहते हैं। बट दोज इंडिविजुअल्स जिन्होंने लिविंग विल नहीं बनाई है, ठीक है, दोज इंडिविजुअल्स जिन्होंने लिविंग विल नहीं बनाई है, कैन दे क्लेम पैसिव यूथनेशिया? क्या उनको भी पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है? सो द आंसर इज यस, बट इन सच अ सिचुएशन द फैमिली ऑफ द सर्वाइवर, ठीक है, और द फैमिली ऑफ द पेशेंट विल हैव टू अप्रोच द हाई कोर्ट। हरीश राणा के केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ, ठीक है। हरीश राणा के केस में क्या हुआ, 2013 में उनको एक इंजरी होती है, ठीक है, उनका एक एक्सीडेंट होता है, वहां पर उनको इंजरी होती है, एंड बिकॉज ऑफ द इंजरी ही गोज इन अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन wherein he was surviving because of clinically assisted or clinically administered nutrition and hydration, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट्स के थ्रू, कुछ पाइप्स के थ्रू उनको न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन प्रोवाइड किया जा रहा था, एंड वो पिछले 13 साल से उसी कंसिस्टेंट स्टेट में थे, एंड देयर वर नो चांसेस ऑफ द रिकवरी ऑफ द पर्सन। जब फैमिली ने हाईकोर्ट को अप्रोच किया, so the High Court refused to allow passive euthanasia in this case, claiming that clinically administered nutrition और hydration को हम permanent vegetative state claim नहीं कर सकते, and because patient वहां पर permanent vegetative state में नहीं है, therefore passive euthanasia will not be allowed. But then subsequently, ठीक है, but then subsequently the family approached the Supreme Court of India, and Supreme Court in this case, अब पैसिव यूथनेशिया कब अलाउ किया जाएगा? सो पैसिव यूथनेशिया विल बी अलाउड इन सिचुएशंस ऑफ योर परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, जहां पर अब पेशेंट टर्मिनली इल हो चुका है और उसकी रिकवरी की कोई चांसेस नहीं है, यू आर जस्ट कीपिंग द पेशेंट अलाइव थ्रू योर मेडिकल इंटरवेंशंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये चीज क्लियर कर दी कि भाई जो क्लिनिकली एडमिनिस्टर्ड न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन की सिचुएशन है, वेर इन द पर्सन इज नॉट रिकवरिंग, ऐसी सिचुएशन में उसको परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट माना जाएगा, एंड द सुप्रीम कोर्ट अलाउड that Harish Rana should be given passive euthanasia, and this was the first time, ठीक है, this was the first time since the judgments of Arna, Schonberg and Common Cause, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली किसी इंस्टेंस में आपका passive euthanasia अलाउ किया गया. So the background of the case was that despite the Supreme Court's earlier recognition of passive euthanasia in common cause, hospitals continued to facing uncertainty regarding withdrawal of life support systems, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट के पैसिव यूथनेशिया के जजमेंट्स के बाद भी ये कंफ्यूजन चलता था, एंड हॉस्पिटल्स नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि पैसिव यूथनेशिया देना है या नहीं, और यहाँ पर तो हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया और हाई कोर्ट ने मना कर दिया. सो द प्राइमरी लीगल इश्यूज इन्वॉल्वड इन द केस वाज दैट डज आर्टिकल 21 इंक्लूड राइट टू डाई विद डिग्निटी, कैन लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट बी लीगली विथड्रॉन, एंड शुड पैलिएटिव केयर अकम्पनी द एंड ऑफ लाइफ डिसीजन. पैलिएटिव केयर का मतलब क्या होता है? Palliative care refers to that kind of a medical treatment wherein you are actually just reducing the pain, wherein you are just reducing the pain without curing the disease. Without curing the disease, उसको palliative care कहा जाता है, ठीक है. तो पैलिएटिव केयर क्या एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस या पैसिव यूथनेशिया के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के केस में पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया, एंड द कोर्ट स्टेटेड दैट राइट टू डाई विद डिग्निटी इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 एंड आर्टिफिशियल प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. अब यहां पे भी हरीश राणा वाज बीइंग केप्ट अलाइव ओनली बिकॉज ऑफ द क्लिनिकली एडमिनिस्टर्ड हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, सिर्फ उसी वजह से वो जिंदा थे. But what about the dignity of the person? So the court made it clear that artificial prolongation of life should not compromise the dignity of the patient, and withdrawal of life support is permissible subject to safeguards. Obviously safeguards वहां पर follow करने होंगे, जैसे लिविंग विल होनी चाहिए, लिविंग विल नहीं है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की परमिशन होनी चाहिए, एंड कंपैशनेट पैलिएटिव केयर शुड बी एंश्योर्ड, कि जब आप विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट कर रहे हो देन वहां पर आपको पैलिएटिव केयर भी उस पेशेंट को प्रोवाइड करनी होगी. Withdrawal of life support का मतलब ये नहीं होना चाहिए that you have abandoned the patient or abandoned the person. So complete abandonment नहीं होना चाहिए. Withdrawal of the life support system should come along with administration of palliative care to the patient as well, so that the dignity of the person can be ensured even at the time of the death. And the constitutional significance of the judgment is it expanded the patient's autonomy while balancing medical ethics and constitutional rights of the individual.
ठीक है. This was one of the first judgment wherein the Supreme Court itself allowed your removal of life support system, which can be considered as passive euthanasia. ठीक है. Another landmark judgment, the second landmark judgment from this year is Hamsa Nandini Nanduri versus Union of India 2026. अब हमसा नंदिनी नंदूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एग्जैक्टली क्या हुआ है देखो. सो pregnant women are entitled to paid maternity leaves. Yes or no? ये तो सबको पता होगा आपको, जिसको मैटरनिटी बेनिफिट कहते हैं. सो प्रेग्नेंट वुमेन इज एंटाइटल्ड टू पेड मैटरनिटी लीव्स. ठीक है. बट अब क्या चेंज किया गया था? सो द चेंज वाज और द कंसर्न वाज विथ रिलेटिव टू और इन रिलेशन टू अडॉप्टिव मदर्स. सो गवर्नमेंट में, ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब्स में विमेन है, द विमेन हु आर इन गवर्नमेंट जॉब, सोशल सिक्योरिटी कोड ऑफ 2020 में क्या रेगुलेशन बनाया गया? दैट अडॉप्टिव मदर्स विल ओनली बी entitled to paid maternity benefit if the adopted child is not more than 3 months old. ये एक प्रोविजन वहां पे बना दिया गया कि अडॉप्टिव मदर्स को पेड मैटरनिटी बेनिफिट सिर्फ तब दिया जाएगा, पेड मैटरनिटी लीव्स तब दी जाएगी इफ द अडॉप्टेड चाइल्ड और द एज ऑफ द अडॉप्टेड चाइल्ड इज 3 months. 3 महीने से बड़ा. ठीक है. इफ यू आर अडॉप्टिंग एनी चाइल्ड हु इज अबव द एज ऑफ 3 months, then the adoptive mothers were not entitled to get any paid maternity benefit or leaves. और गवर्नमेंट का, अब देखो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे यू आर एक्चुअली differentiating between a biological mother and an adoptive mother. गवर्नमेंट यहां पर क्या कर रही थी? गवर्नमेंट यहां पर डिफरेंशिएट कर रही थी बिटवीन अ बायोलॉजिकल मदर एंड अडॉप्टिव मदर. कि अगर बायोलॉजिकल मदर है, so biological mother will be entitled to get paid maternity leaves. But adoptive mother, in case the adopted child is above the age of 3 months, then they will not be entitled to get any paid maternity benefit. और गवर्नमेंट के ऊपर जब यहाँ पर केस हुआ, when the case was filed against the government for differentiating between these two classes of women, arbitrarily गवर्नमेंट का कहना ये था कि adoptive mother जब बच्चे की एज 3 महीने से ज्यादा है, so they can take the benefit of the creche facility which is given in the public offices. And therefore the case was filed in the Supreme Court of India. जहां पर the background of the case was primarily that the government service rules denied maternity leave to adoptive mothers in certain situations, and the petitioner argued that maternity leave serves the larger objective of mother and child bonding rather than mere post pregnancy recovery. गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव ये था कि भाई मैटरनिटी लीव्स इस वजह से दी जाती है कि वो जो बायोलॉजिकल मदर है, ठीक है, वो प्रेगनेंसी के बाद रिकवर कर पाए, मेडिकल रिकवरी उनकी हो पाए. बट पिटिशनर का कहना यह था दैट मैटरनिटी लीव्स आर नॉट सर्विंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोस्ट प्रेगनेंसी रिकवरी, रादर दे सर्व अ लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ मदर एंड चाइल्ड बॉन्डिंग. वो जो इनिशियल पीरियड की मदर और चाइल्ड के बीच की बॉन्डिंग होती है, वो भी इंश्योर होती है आपकी मैटरनिटी लीव्स के थ्रू. सो लीगल इश्यूज इन दिस केस वर दैट वेदर adoptive mother deserve maternity benefits or not, and whether this denial violates equality given under Article 14 and Article 16 of the Constitution of India. Article 14 talks about equality before law, and simple sa point of view yahi hota hai that any classification will be considered as valid when it is a reasonable classification based on intelligible differential. नाउ इन दिस केस ये जो गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था कि भाई अडॉप्टिव मदर के पास क्रेश फैसिलिटी अवेलेबल होगी, वहां पर कोई बायोलॉजिकल रिकवरी की जरूरत नहीं है, इन सारे ग्राउंड्स को कोर्ट ने रिजेक्ट किया.
क्योंकि कोर्ट ने कहा देखो जो अडॉप्शन का प्रोसीजर है वो अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड और लंबा होता है कि इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस अडॉप्शन फाइनलाइज या इफेक्टिव होते होते वो बच्चा 3 महीने से ज्यादा की एज का हो ही जाएगा। अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, a child is available for adoption or child can be adopted when they are legally available for adoption, और उस बच्चे की लीगल अवेलेबिलिटी आते आते 3 महीने का टाइम निकल ही जाता है। तो ऐसे में तो हर अडॉप्टिव मदर की सिचुएशन में आप मैटरनिटी बेनिफिट का स्कोप ही हटा दोगे। And therefore, the court made it clear that adoption creates a legal parent-child relationship which is equal to biological parent. मैटरनिटी बेनिफिट्स मदर को दिया जाता है, एक्ट में कहीं पे भी बायोलॉजिकल मदर की बात नहीं हुई है। अब उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेदर इट इज अ बायोलॉजिकल मदर or adoptive mother, she will be entitled to get maternity leaves. And the court made it clear that early bonding is essential for the child development, and therefore maternity leave cannot be restricted only to biological mothers. This was the judgment which was given by the Supreme Court in Hamsa, Nandini, Nanduri versus Union of India. And the significance of this judgment is that it promoted inclusive parenting and child welfare. कि चाहे adoptive mother हो, चाहे biological mother हो, both will be entitled to get maternity leaves as per the law. ठीक है, चलिए, let's move to the third judgment. The third judgment of this year is Lieutenant Puja Pal and others versus Union of India, which was about the issue of permanent commission for women in the army. ठीक है, और ये डिबेट ना बहुत टाइम से हमारी कंट्री में चल रहा है। विमेन को शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंडर तो अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है, ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के हिसाब से विमेन को तो अपॉइंटमेंट मिल जाता है इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंट्री, बट व्हेन इट कम्स टू ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन टू द विमेन, when it comes to granting permanent commission to the women in the armed forces, the structure of the armed forces of our country has always been resistance or resilient to this kind of a appointment mechanism or job benefits. एंड इसी वजह से रिसेंटली दोबारा केस फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बैकग्राउंड अगर आप देखोगे इस सिचुएशन का, सो ऑल्दो बबीता पूनिया जजमेंट ऑफ 2020 recognized women's right in the army, implementation disputes continued regarding permanent commission. बबीता पूनिया की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज कर दिया था दैट women will be entitled to get permanent commission in the army, बट इंप्लीमेंटेशन फिर भी प्रॉब्लमैटिक बना हुआ था। क्योंकि होता क्या है कि आपका परमानेंट कमीशन मिलने में ना कई बार एक आपकी एक रिपोर्ट होती है जो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बनती है, जिसको एनुअल कैरेक्टर रिपोर्ट हम कहते हैं, ठीक है, इट इज एसीआर, इट इज अ काइंड ऑफ एन अप्रेजल रिपोर्ट ऑफ एन एम्प्लॉय। अब एसीआर में क्या होता है कि विमेन मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस को वहां पर एसीआर में उस तरीके के कट ऑफ मार्क्स ही प्रोवाइड नहीं करे जाते, मेरिट पॉइंट्स ही नहीं दिए जाते थे, एंड इन मेनी केसेस दिस वाज बिकॉज ऑफ द जेंडर ऑफ द कैंडिडेट ओवर देयर, एंड देयरफॉर the legal issue in this case was that is permanent commission merely discretionary or does the denial violate equality? Now I can understand कि आपके दिमाग में पॉइंट चल रहा होगा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट कमीशन एंड द शॉर्ट सर्विस कमीशन, कि शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन के बीच में डिफरेंस होता क्या? तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। द डिफरेंस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर यू विल हैव इन द आर्म्ड फोर्सेस, योर राइट ऑफ पेंशन एंड योर एग्जिट ऑप्शंस। आप कितने टाइम पीरियड तक आर्म फोर्सेस के साथ काम कर सकते हो, आपको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी आर्म फोर्सेस में काम करने की वजह से, एंड योर एग्जिट ऑप्शन। दीज आर द प्राइमरी ग्राउंड्स ऑन विच द डिफरेंस कैन बी क्रिएटेड बिटवीन परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो परमानेंट कमीशन में क्या होता है, व्हेन इट कम्स टू द टेन्योर ऑफ द कैंडिडेट, इट इज अंटिल मैंडेटरी रिटायरमेंट एज, ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बन जाता है आपका, जब तक आपकी रिटायरमेंट एज नहीं आएगी तब तक आप आर्म फोर्सेस के लिए काम करोगे, दैट इज परमानेंट कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपका टेन्योर क्या होगा, तो इनिशियली इट इज ऑफ 10 years which is extendable to 14 years। इनिशियल 10 years का आपको टेन्योर दिया जाता है which is extendable to 14 years आज। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन में टेन्योर होता है, तो रिटायरमेंट तक आप वहां पर रहोगे ये चीज जरूरी नहीं, बहुत जल्दी आपको आर्म फोर्सेस से रिटायर कर दिया जाता है, तो टेन्योर आपका छोटा होता है इन शॉर्ट सर्विस कमीशन। व्हेन इट कम्स टू पेंशन, the persons who have joined the armed forces are on permanent commission, they are fully eligible upon retirement,
रिटायरमेंट के बाद दे आर फुल्ली एलिजिबल टू गेट द पेंशन. बट शॉर्ट सर्विस कमीशन में अगर हम सिमिलर चीज को देखने की कोशिश करें, so these are not eligible for regular pension and eligibility only applies if subsequently converted to permanent commission. अगर किसी शॉर्ट सर्विस कमीशन कैंडिडेट को आपने बाद में कन्वर्ट कर दिया इनटू परमानेंट कमीशन, सिर्फ तभी वो एंटाइटल्ड होंगे टू गेट द पेंशन. अदरवाइज दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रेगुलर पेंशंस. ऑन द अदर हैंड परमानेंट कमीशन में फुली एलिजिबल. एंड एग्जिट ऑप्शंस की अगर हम बात करें, so if you are a candidate who was given a permanent commission in the armed forces, there is low flexibility because there is a long-term commitment. Retirement की age आने तक, which is generally between 54 to 60 years in the armed forces, depending upon the wing you are working on. ठीक है, तो low flexibility होती है, long-term commitment होता है. But short service commission में आपको easy exit option मिल जाते हैं and you can transition to civil sector post your tenure. This is the primary difference between short service commission and permanent commission. अब होने क्या लगा कि वुमेन को जनरली सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन अलाउ किया जाता था, बट सुप्रीम कोर्ट ने पूनिया केस में 2020 में ये चीज क्लियर कर दी दैट वुमेन विल बी एंटाइटल्ड टू परमानेंट कमीशन. बट वो जो शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन में ये जो एलिजिबिलिटी या कन्वर्जन होता है वो एसीआर पे डिपेंडेंट था और एसीआर उनके फेवर की बनाई नहीं जाती थी. सो लेफ्टिनेंट पूजा पाल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने क्लियरली दोबारा ये चीज कही that permanent commission is a constitutional obligation and therefore gender stereotypes cannot determine military careers. ठीक है, वो जो stereotyping on the basis of gender है वो नहीं डिटरमाइन करेगी कि मिलिट्री में किसी को करियर मिलेगा नहीं मिलेगा on the basis of their gender. And equal promotional opportunities must be provided to women as well. क्योंकि अगर आप वो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हो, that differential treatment in itself violates Article 14, 15 and 16 of the Constitution of India. And this judgment, the constitutional significance of this judgment is that it strengthened the substantive gender equality under Article 14, 15 and 16 of the Constitution. Okay? Clear? Everyone? Yeah. So let's move to the next one. Now the next judgment is Association for Democratic Reforms versus Election Commission of India. This was primarily related to the electoral roll revisions. अब ये चीज मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने करंट अफेयर्स के अंदर प्रॉपरली कवर की होगी इन डिटेल, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर देयर वाज अ सब्सटैंटिव अमाउंट ऑफ व्हाट शुड आई से कंट्रोवर्सी इन आवर कंट्री, व्हिच वाज द एक्सरसाइज ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ द इलेक्टोरल रूल्स. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रूल्स. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब एसआईआर की एक्सरसाइज को कंडक्ट करना शुरू किया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब एसआईआर की एक्सरसाइज को कंडक्ट करना शुरू किया ना, उसके बाद देयर वर lakhs of individuals, which you can say there were millions of individuals who were excluded from the voter roll. और इस एक्सक्लूजन को ही प्राइमरी ग्राउंड बनाकर एडीआर ने चैलेंज किया इस एंटायर एक्सरसाइज को इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, कि वेदर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज एक्चुअली हैविंग द पावर टू कंडक्ट सच एन एक्सरसाइज और नॉट, and therefore whether this exercise in itself can be considered as a constitutional permissible activity on the part of election commission or not. So the background of the case was the election commission of India conducted a special intensive revision of electoral rolls. The exercise was challenged alleging possible exclusion of genuine voters. कि genuine voters का जो possible exclusion हो रहा था, millions of people were actually excluded from the voter list. So इस ground पे उसको challenge किया गया. Now the legal issues which are framed by the Supreme Court in this case were that whether the SIR violates free and fair elections and whether the election commission exceeded its constitutional powers. ठीक है, कि ये SIR की एक्सरसाइज कंडक्ट करना क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के कॉन्सेप्ट को हमारे वायलेट करता है, एंड वेदर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एक्सीडिंग इट्स पावर. नाउ व्हेन यू लुक एट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट क्लियरली स्टेटेड दैट आर्टिकल 320 just a second guys, na? Just a second. Yeah. So Article 324 of the Constitution of India imposes a duty on the Election Commission or gives the power to the Election Commission of India of
superintendent's direction and control over the elections. ठीक है? Just a second, guys, है ना? Just give me a second. Yeah. So Article 324 gives the Election Commission of India the power of superintendence, direction and control to ensure free and fair elections in our country. अब उसी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि भाई टाइम टू टाइम वोटर्स लिस्ट भी अपडेट होती रहनी चाहिए because of the migration of the people, because of addition, because of subtraction, because of duplication, and so on and so forth. And therefore, when it came to the challenge of the ECI's power, that whether ECI is having the power to conduct such an exercise or not, the court ruled that the Election Commission of India possesses the power under Article 324 of the Constitution to conduct large-scale intensive revision of the electoral rules. ठीक है कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव एरर फ्री इलेक्टोरल रोल्स एज वेल एंड देयरफॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर होगी कि वो इस तरीके के इंटेंसिव रिवीजन को कंडक्ट कर सकता है. दूसरा प्राइमरी इशू या क्वेश्चन जो यहां पर डेवलप होना शुरू हुआ दैट वाज अबाउट द सिटीजनशिप स्क्रूटनी ऑफ द पीपल कि भाई वोटर्स लिस्ट को ना अब एक तो हमारी कंट्री में आज की डेट में दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन का जो टॉपिक बना हुआ है वो यही है. पहला मैं नहीं बताऊंगा. दूसरा जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन का टॉपिक बना हुआ है ना वो यही है कि विच डॉक्यूमेंट प्रूव्स द सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन. हम पासपोर्ट मानते थे तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिसेंटली क्लियर किया दैट पासपोर्ट इज जस्ट अ ट्रेवल डॉक्यूमेंट. इट डज नॉट प्रूव सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन. हमें वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल इलेक्शन कार्ड वोटर आईडी कार्ड लगता था कि हमारा सिटीजनशिप का प्रूव होगा. वो भी गड़बड़ हो चुका है. बट जब सिटीजनशिप स्क्रूटनी या एडजुडिकेशन इसको लेकर जब डिस्प्यूट होना स्टार्ट हुआ so the Supreme Court stated that while ECI is empowered to examine the citizenship status during verification, it does not have the authority to divest an individual of their citizenship. कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक तरीके से सिटीजनशिप चेक तो कर सकता है किसी पर्सन की, ठीक है, वेरिफिकेशन के एक्सरसाइज के टाइम, बट इट इज नॉट हैविंग द पावर कि वो किसी पर्सन से सिटीजनशिप उसकी वापस ले. इफ अ नेम इज डिलीटेड ओवर सिटीजनशिप डाउट कि अगर किसी वोटर का नाम किसी पर्सन का नाम इलेक्टोरल रोल से इस वजह से हटाया जाता है कि भाई उसकी सिटीजनशिप के स्टेटस को लेकर डाउट है, then the ECI must refer the case to the competent authority under the Citizenship Act, which must grant a fair hearing. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोगों का नाम तो डिलीट कर सकता है अगर उसको सिटीजनशिप डाउटफुल लगती है, बट वो ये नहीं कह सकता कि इस पर्सन के पास सिटीजनशिप नहीं होगी हमारी कंट्री की, वो डाइवेस्ट नहीं कर सकता. अगर डाउट है, ECI must refer such an incident or such a case to the relevant authority under the Citizenship Act, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आई, and that authority will give a proper or a fair hearing to such an individual. ठीक है. Another point was about proportionality कि भाई क्या इस तरीके की एक्सरसाइज कंडक्ट करना जरूरी था या प्रोपोर्शनल था कंसिडरिंग जितने नंबर ऑफ लोगों का नाम वहां से डिलीट होता जा रहा था. So the court found that SIR, which saw millions of names reviewed or flagged for ancestral linkages, constitutionally valid as it serves the legitimate purpose of clean electoral rolls without using excessive measures. कोर्ट ने कहा लोगों के नाम हट रहे हैं, एंसेस्ट्रल डाउटफुल्स आ रहे हैं, ठीक है, बट वो एक लेजिटिमेट पर्पस क्योंकि वहां पर सर्व कर रही है, दैट इज हैविंग क्लीन इलेक्टोरल रोल्स, एंड देयरफॉर प्रोपोर्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सरसाइज कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल होगी. And when it comes to the significance of this judgment balanced the electoral integrity with protection of voting rights. Okay, so this was the case of ADR versus Election Commission of India. Let's move to the next case. Now, the next case which we have is Dr. Jaya Thakur versus Union of India. This is the case which was related to menstrual hygiene. So one thing which was seen or which was realized that there was an increased dropouts of girls from educational institutions. And when a research was conducted with respect to these dropouts, it came to light that lack of
lack of menstrual hygiene was one of the relevant factor over there. कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे, लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, दैट वाज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन दैट व्हाई girl childs are actually dropping out from the school or the educational institution. And this is true as well. Educational institutions are not the only place जहां पर आपको ये प्रॉब्लम दिखेगी. ठीक है, proper sanitation mechanisms is also missing from majority of the district courts of this countries, lower courts of this country. Subordinate judiciary also faces this kind of a crisis. But what happened in the case of Dr. Jaya Thakur versus Union of India was that a PIL was filed to sought recognition of menstrual hygiene as a constitutional right connected to dignity, health and education. एक PIL फाइल हुई जहां पे प्राइमरली ये मांगा गया, ये डिमांड रखी गई कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रिकॉग्नाइज किया जाए, फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया जाए. ठीक है, connected to dignity, health and education, that is 21 and 21A of the constitution. And जो इशू रेज किए गए थे इस केस में, they were about access to sanitary products, menstrual stigma, school absenteeism and public health concerns. These are the primary issues which are raised and discussed in this particular case. अब इस केस को हम ऑलरेडी पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बट सुप्रीम कोर्ट के इस केस के अगर जजमेंट को हम यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करें, so there were three fundamental rights which were primarily discussed or emphasized by the Supreme Court of India while recognizing menstrual hygiene as part of fundamental right under the Constitution of India. उसको dignity के साथ relate किया. The Supreme Court simply stated that adequate menstrual hygiene serves several key fundamental rights or has several key fundamental rights to prevent female students from dropping out of the school due to biological realities. वो चॉइस नहीं है, वो बायोलॉजिकल रियलिटी है और इसकी वजह से बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि लिंक्ड हैं एडिक्वेट मेंस्ट्रुअल हाइजीन की रिक्वायरमेंट से. जैसे आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी. चलो, आपने बच्चों को, लड़कों को और लड़कियों को बराबर पढ़ने का तो मौका दे दिया, फॉर्मल सेमनेस तो आपने दे दी, बट क्या रीजनेबल अकोमोडेशन वहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है? जब हाइजीन को लेकर, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर, सैनिटरी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट को लेकर, सैनिटरी हाइजीन को लेकर आप कोई सपोर्ट सिस्टम दे ही नहीं रहे, तो आपने फॉर्मली तो दोनों को सेम रिकॉग्नाइज कर दिया, इक्वालिटी दे दी है, बट इज दैट सब्सटैंटिव इक्वालिटी? एंड देयरफॉर सब्सटैंशियल इक्वालिटी रिक्वायर्स that menstrual hygiene should be recognized as part of Article 21 of the Constitution. Then Article 21, which is about right to life, it declared that, or the court declared, menstrual dignity and hygiene as inseparable facets of living with dignity and health. This is self-explanatory in nature. है ना, menstrual hygiene और menstrual dignity, obviously बात है, किसी भी लड़की की डिग्निटी और हेल्थ से रिलेटेड एक इंसेपरेबल पार्ट है. And right to education, ये Article 21A की बात करें, so the court framed that the lack of menstrual products and toilets are impermissible financial barrier and a violation of right to free and compulsory education. कि Article 21 ने ये तो कह दिया that every child below the age of 14 years or every child between the age of 6 to 14 years will be provided free and compulsory education. बट ना तो आप उसको सेपरेट टॉयलेट्स प्रोवाइड करना, सैनिटरी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना, सैनिटरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, ये सब एक तरीके के फाइनेंशियल बैरियर बन जाते हैं लोगों के लिए. एंड देयरफॉर दिस इज नॉट समथिंग व्हिच कैन बी परमिटेड, कीपिंग दैट right to education is a fundamental right as per Article 21. Now, therefore, to tackle this issue of dropouts and absenteeism, the court stated that to tackle this staggering dropout and absenteeism rates, the court issued a continuing mandamus. देखो, mandamus का मतलब क्या है? Mandamus is the order or command of the court. ठीक है, mandamus basically refers to the order or a command of a court. Continuing mandamus का मतलब क्या होता है कि वहां पर रेगुलर बेसिस पे कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट की जाएंगी. The court is actually looking into the matter on a regular basis. रेगुलर रिव्यू होंगे उस चीज के. So court ने continuing mandamus issue करी, instructing all states and union territories to provide free sanitary napkins and vending machines in schools, to ensure availability of gender segregated toilets and safe scientific pad disposal mechanisms in school complexes, and implement the directives within strict compliance timelines
appointing the Secretary of Ministry of Health and Family Welfare as the nodal officer. And this was the case of Dr. Jaya Thakur, which resulted into, okay, this was the case of Dr. Jaya Thakur, which resulted into recognition of menstrual hygiene as part of Article 21 of the Constitution. Okay. Now, the last case for the day is Union of India versus Rohit Nathan. अब यहां क्या हुआ देखो, हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रिजर्वेशन कैन बी गिवन टू अदर बैकवर्ड क्लासेस, बट the affluent portions of the other backward classes are not entitled to get the benefits of the reservation, है ना. और ये affluent classes को हम किस नाम से बुलाते हैं? क्रीमी लेयर, राइट. क्रीमी लेयर में जो लोग आते हैं they are not entitled to get the benefit of the OBC reservations. बट क्रीमी लेयर में होगा कौन कौन? तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स के लिए क्या किया गया? पब्लिक सर्वेंट्स के लिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्रीमी लेयर को लेकर कुछ पोस्ट आइडेंटिफाई कर दी गई, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स. सो जो भी लोग डायरेक्टली रिक्रूटेड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो भी लोग डायरेक्टली रिक्रूटेड, जिनके पेरेंट्स डायरेक्ट रिक्रूटेड ग्रुप ए, ग्रुप बी सर्वेंट्स होंगे, एम्प्लॉइज होंगे ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्टली रिक्रूटेड ग्रुप ए या ग्रुप बी के एम्प्लॉय होंगे, वो क्रीमी लेयर के अंडर फॉल करेंगे. बट प्रॉब्लम दूसरी तरफ क्या हुई कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे बैंक्स हो गए, बाकी के पीएसयूज हो गए, इनकी कौन सी पोस्ट क्रीमी लेयर के अंडर फॉल करेंगी, ये कभी बताया ही नहीं गया. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इनके जो ग्रुप ए, ग्रुप बी एम्प्लॉइज होंगे वो तो क्रीमी लेयर के अंडर फॉल कर जाएंगे. बट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बैंक्स की कौन सी पोजीशन, कौन सी जॉब्स, कौन सी रैंक्स, कौन सी पोस्ट्स क्रीमी लेयर की डेफिनेशन के अंडर फॉल करेंगे, ये कभी बताया ही नहीं गया. तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए किस ग्राउंड को आइडेंटिफाई कर रहे हो, किस ग्राउंड को यूज कर रहे हो टू आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर? दैट इज पोस्ट ऑन विच द पेरेंट्स आर वर्किंग. फिर 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेटरी ऑर्डर निकाला और उन्होंने कहा कि अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और बैंक्स के लिए हमने कोई पोस्ट आइडेंटिफाई नहीं की है, तो आप पेरेंट की इनकम, पेरेंट की जो सैलरी है, उसको इनकम वाला फैक्टर मानकर उसके बेसिस पे जज कर लो. सिचुएशन समझ में आई कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ए, ग्रुप बी की पोस्ट के बेसिस पे लोगों को आपने क्रीमी लेयर की डेफिनेशन में आइडेंटिफाई करने का ग्राउंड दे दिया. ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या बैंक्स में काम कर रहे हैं, वहां के लिए तो आपने पोस्ट नहीं बताई, स्टेटस नहीं बताया, सैलरी अकेली बता दी कि सैलरी को एक फैक्टर मान लो. तो एक जगह आप सैलरी कंसिडर कर रहे हो, एक जगह आप सैलरी कंसिडर नहीं कर रहे हो, तो ये तो सिमिलर क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स को डिफरेंटली ट्रीट करने वाली बात होगी, विच मस्ट बी आर्बिट्ररी इन नेचर. यही चीज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रोहित नाथन के केस में. सर्टेन यूपीएससी कैंडिडेट्स थे, उनको जब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना शुरू करा, तो उनके पेरेंट्स की सैलरी के बेसिस पर, क्योंकि बैंक्स में काम कर रहे थे पेरेंट्स, तो उनकी सैलरी के बेसिस पर उनको क्रीमी लेयर के अंदर डाल दिया और रिजेक्ट कर दिया फॉर्म को. दे चैलेंज्ड इट इन द हाई कोर्ट एंड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल. सबने पिटिशनर्स के फेवर में ही आपकी जजमेंट दिया, ऑर्डर पास किया, एंड देन फाइनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैलेंज्ड इट in the Supreme Court. So the authority followed, background क्या था, the authorities were following different methods while calculating creamy layer income. सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए तो अपने पोस्ट के बेसिस पे जज किया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या बैंक्स के एम्प्लॉय के लिए तो आपने सैलरी के बेसिस पे करना शुरू कर दिया. तो ये तो सेम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ही आप अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हो. सो दे वर यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. Now, income from government employees was treated differently from income earned in the private sector as well. So, legal issues था कि whether different income sources
should receive different treatment. क्या अलग अलग इनकम सोर्सेज को अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाए? तो कोर्ट का जजमेंट यहां पर यह था दैट इनकम शुड बी ट्रीटेड यूनिफॉर्मली. ठीक है, और आप इनकम को एक सेंट्रल फैक्टर बनाकर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, क्रीमी लेयर को डिसाइड नहीं कर सकते. Public and private sector earnings cannot receive different treatment solely because of the employer. कि प्राइवेट सेक्टर में आप इनकम को, सैलरी को नहीं गिन रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए आप इनकम को नहीं गिन रहे हो, पीएसयू के एम्प्लॉय के लिए आप इनकम को गिनना शुरू कर दोगे. दिस इज नॉट अलाउड. And uniformity must promote equality, and this judgment strengthened the fairness in reservation policy implementation. And कोर्ट ने यहां पर यह भी क्लियर कर दिया था that salary alone cannot be the ground for deciding that whether the candidate falls within the category of creamy layer or not. Salary sole character नहीं हो सकता है, आपको स्टेटस भी चेक करना होगा. सो दिस वाज द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रोहित नारायण. ठीक है, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट केसेस. नाउ इफ यू वांट पार्ट 2 ऑफ दिस काइंड ऑफ अ सेशन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट सीरीज, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी तबियत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास. ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू.